एग्जाम्पल 2 को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। फाइंड एलसीएम एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे? पहले 6 का 2 3 जा 6, राइट, एंड वी हैव 6 इज इक्वल टू 2 and 3। सो 6 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 2 and 3। 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 1 जा 2, then 0, 2 5 जा 10, 20 is equal to 2 into 2 into 5। इसको कंबाइन करेंगे तो लिख सकते हैं 2 raised to power 2 into 5। अब HCF क्या होता है? दोनों का HCF अगर हमें निकालना है तो HCF equal to the smallest power of common prime factors, right? इनके product of smallest power of common prime factors। तो HCF of 6 and 20 क्या होगी? स्मॉलेस्ट पावर क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है? 2, राइट। स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 2, और तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। 3 and 5, so 2 is the HCF of 6 and 20। अब LCM क्या होगा? LCM is equal to product of highest power of every factor, every prime factor involved। राइट। सो हाईएस्ट पावर, अब इसमें हाईएस्ट पावर अगर हम देखें तो क्या होंगे? कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व है? 2 है, 3 है और 5 है। 2 3 and 5। सो हर फैक्टर की हाईएस्ट पावर। एलसीएम अगर हमें निकालना है तो एलसीएम ऑफ 6 and 20 क्या होगी? ओके, सो आई टेक द ब्लैक पेन। 2 की हाईएस्ट पावर, फैक्टर 2 की हाईएस्ट पावर 2 raised to power 2 multiply, then we have another factor 3 raised to power 1, another factor we have 5 into 5 raised to power 1 is equal to 4 into 3 into 5, 4 3s are 12 into 5, ये क्या आएगा? 12 5s are 60। Therefore LCM of 6 and 20 is 60, right? LCM of 6 and 20 60। Okay, so this is our first question, first example I have done। Example 3 क्या है? Example 3, find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method, hence find LCM। 96 और 404 का HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, और फिर उसका LCM भी फाइंड आउट करना है दोनों का। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 96 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे वो निकालते हैं पहले। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, देन 2
2 ja 4, 2 4 ja 8, then 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, then 2 6 ja 12, then 2 3 ja 6. So 96 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 96 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 5 times 1 2 3 4 5, right? 5 times into 3. So we can also write as 2 raised to power 5 into 3 raised to power 1, right? These are the prime factors of 96, 2 and 3. Now we factorize 404. So 404 divided by 2. This is 2 2 ja 4, 0, 2 2 ja 4. Then 2 1 ja 2, 0, 2 1 ja 2. Okay, so we have prime factors of 404. We have 2 into 2 into 101. This is equal to 2 raised to power 2 into 101, right? Okay. Now HCF of 96 and 404. Smallest power of the common factor. 2 is the common factor and the smallest power of 2 is 2 raised to power 2. So here 2 raised to power 2, that means 4 is the HCF. Okay, then LCM. LCM of 96 and 404. LCM of 96 and 404. Highest power of every factor involved. कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं इसमें, वो देखिए कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं. एक तो 2 है, 3 है एंड 101 है, राइट? सो हाईएस्ट पावर 2 रेज टू पावर 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 रेज टू पावर 5. देन मल्टीप्लाई 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 रेज टू पावर 1. देन 101 की हाईएस्ट पावर 1. सो नाउ वी हैव, इसको हम चेक कर सकते हैं हमारे पास क्या आएगा. दिस इज 2 की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 5. We have 32 multiply 3 into 101. What we will get? 32 multiply 3 multiply 101. Okay, this is equal to 9696. So this will equal to 9696. So the HCM of HCF of 96 404 is 4 and LCM of 96 404 is, this is 96 96. Okay, अब एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है. अब इसमें थ्री नंबर्स वी हैव गिवन 3 नंबर्स. 3 नंबर्स दे रखे हैं हमारे को, इन तीनों नंबर के हमें निकालने हैं HCF और LCM. ओके, तो पहले 6 का, वैसे तो हम 6 का निकाल चुके हैं, 6 का निकालते हैं पहले. चलिए 6 2 3 जा 6. सो 6 किसके बराबर हो गया? 2 into 3, 2 raised to power 1, 3 raised to power 1, right? Then 72. 2 3 ja 6 and 2 6 ja 12, 36.
divisible by 2. Okay, 2 ones are 2, 1, 2 8 are 16, 2 9s are 18, and 9 is divisible by 3, 3 3s are 9. So we have 72 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 3, and this we can write as 2 raised to power 3 into 3 raised to power 2. Okay. Now 120 को फैक्टराइज करेंगे, 120 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. 120 divided by 2. First it is divisible by 2. So 2 6 are 12, 0. Then 2 3 are 6, 0. 2 1s are 2, 2 5s are 10. Now it is divisible by 3. 3 5s are 15. Now the factors of 120. 120 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 5. कंबाइन करके लिखेंगे इसको. 120 इक्वल टू होगा 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 1. राइट. सो 6 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? अब इन्हें सबको कंबाइन करके लिख लेते हैं. 6 के प्राइम फैक्टर हैं 2 रेज टू पावर 1 इंटू 3 रेज टू पावर 1. 72 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2. एंड 120 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 120 के प्राइम फैक्टर हैं 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 1. ये हो गए. ओके. अब HCF of 672 120. सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? हर किसी नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे. राइट. सो इसीलिए HCF निकालने में हेल्प मिलती है. सो कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2 is the common factor, 3 is also the common factor. So smallest power of the common factor, every common factor. 2 raised to power 1, smallest power 2 है, 2 raised to power 1 है. 2 की smallest power 2 raised to power 1. And then 3 raised to power 1. 3 is another common factor. 6 also have 3, 72 also have 3, 120 also have 3. Right? तो smallest power क्या है? 3 raised to power 1 multiplied by 3 raised to power 1. So we have 2 into 3, 6 is the HCF of 672 120. LCM क्या है? Highest power of every prime factor involved. Right? Highest power. So कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं इसके अंदर? प्राइम फैक्टर 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, एंड देन 5 है. सो हाईएस्ट पावर ऑफ 2, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 मल्टीप्लाई, देन 3 की हाईएस्ट पावर 2, 2 है, सो दिस इज 3 रेज्ड टू पावर 2 मल्टीप्लाई. 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, 5 रेज्ड टू पावर 1. सो वी हैव 8 into 9 into 5 equal to this is 8 5s are 40 and multiplied by 9 we have 360. Right. So LCM of 672 120. So this is the solution. Hence
HCF of 672 120 is equal to 6. LCM of 672 120, we have 360. So this is our solution of example number 4. Okay, I hope कि आपको चारों एग्जांपल्स 2, 3 and 4 एकदम क्लियर हो गए होंगे. इफ यू हैव एनी डाउट तो आप अपने डाउट्स जो हैं ड्रॉप योर डाउट्स इन कमेंट, राइट. सो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लाइक करिए, है ना, और शेयर कर दीजिए इसको. वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें. और क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. सब्सक्राइब द चैनल. क्या नाम है चैनल का? शेख हैंड विथ लाइफ. शेक हैंड विथ लाइफ, जिससे कि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल के नोटिफिकेशन आपको तुरंत और सबसे पहले मिल जाए. राइट. थैंक यू.